Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope you are fine. I hope you are studying and I hope you are listening to your parents as well. क्या हाल है आप सब लोगों के? Again, I'm Faiza Nadeem, your English teacher. क्या करें हम? जानेंगे बोर्ड पे चल के. Let's move on to the board. All right. All about books का लास्ट लेक्चर. ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके सारे ग्रामर टॉपिक्स इसके लास्ट लेक्चर में कवर अप करूंगी, इसीलिए मेरा बोर्ड आपको ग्रामर कह रहा है. अब जो पहला टॉपिक मैंने पिक किया है जो आपकी बुक में भी है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस का. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन आंसर्स लिख के आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के आंसर्स दे दिए थे, लेकिन फिर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई कि हमें रिलेटिव प्रोनाउंस को रिकैपिचुलेट कर दें, उसको रिवाइज कर दें. तो मैंने ये सारा दोबारा आपको रिवाइज करने के लिए, रिकैपिचुलेट करने के लिए, समझाने के लिए ये एक क्वेश्चन दोबारा करा रही हूँ आपको. ठीक है, व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? फर्स्ट द डेफिनेशन. एक जल्दी से रिकैपिचुलेशन कर ले रिलेटिव प्रोनाउन की, ताकि हम ग्रामर के अपने फर्दर टॉपिक्स की तरफ बढ़ सके. तो ये तीन मैंने आपको ऑप्शंस दी हुई हैं बोर्ड पे जो आपको ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि व्हाट अ रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली इज. इट रेफर्स टू द नाउन व्हिच कम्स राइट बिफोर दिस प्रोनाउन एंड इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को रेफर कर रहा होता है जो उससे इमीडिएटली पहले आ रहा होता है. ठीक है, और इसीलिए उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इट जॉइंस द टू सेंटेंसेस टुगेदर. And third point is the examples of relative pronouns. ठीक है, अब ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए, रीड कर लिए. ठीक है, relative pronoun immediately बाद में आता है अपने ओरिजिनल नाउन के जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा होता है. who, which, that, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होता है. एग्जाम्पल देखिए हम इसकी. Why are you so sad? I've lost the pen that I bought this morning. अब ये पेन को ये प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए ये इस पेन का रिलेटिव प्रोनाउन है. प्लस ये एक सेंटेंस है, Why are you so sad? I've lost the pen. ठीक है, That I bought this morning. दोनों बराबर के सेंटेंसेस हैं. I lost the pen, full stop. I bought it this morning, full stop. ठीक है, I lost the pen, dependent clause. That I bought this morning, independent clause. इन दोनों को join कर रहा है, ये relative pronoun है. Quick recapitulation. Relative pronoun who, which, that जो दो sentences को join करें और immediately after आए अपने reciprocal noun के बाद. पहली example is on the board. Let's move on to the next example. Have you seen the man who bought a book from the shop just now? कौन सा relative pronoun? Who. ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? The man. Immediately उसके बाद आ रहा है, दो sentences को join कर रहा है और word क्या है? Who. The man whom you were talking to at the meeting is my cousin. अब यहाँ पर who भी लग सकता है, whom भी लग सकता है. मैंने जब आपको प्रोनाउंस का लेक्चर किया था ये आपको समझाया था, उसके बाद भी समझाया था और आज फिर समझा रही हूँ. ठीक है, फरीद said that he needed most was a holiday. ठीक है, फरीद said is a dependent clause. I will say Farid said. You will ask me what did he say? Then I will use this relative pronoun to tell you what he actually said. Right? Have you got anything which the poor women can take for their children? Have you got anything? Incomplete sentence. Dependent clause. We used a relative pronoun to turn this into a complex sentence. ठीक है? Which the poor man can take for their children. ठीक है? Again, जल्दी से याद कर लो relative pronouns कौन से होते हैं. एक immediately nouns के बाद आते हैं, दो sentences को join करते हैं, तीसरा उनकी example है who, whom, which and that. टॉपिक खत्म.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिवियल क्लॉज। एडजेक्टिवियल क्लॉजेस क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। दे मेक द टेक्स्ट बिकम अलाइव, टेल्स यू अबाउट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद होती है। ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस जो है जिसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट मौजूद हो वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है। आपका क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल क्लॉजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है। एडजेक्टिवल क्लॉजेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे की मैंने बोर्ड पे लिख दी है। कैसे? सबसे पहले तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से? अभी अभी मैंने आपको इसीलिए रिकैपिचुलेट करके दिया है। ठीक है। हु, विच, दैट, जो इमीडिएटली अपने नाउन को फॉलो कर रहे होते हैं और जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिवियल क्लॉज वो होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के इमीडिएटली बाद में आते हैं। वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं और वो किसी भी नाउन्स और प्रोनाउंस को फर्दर मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। सो इस सेंटेंस में क्या एडजेक्टिवियल क्लॉज है? इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिवियल क्लॉज है। ऑब्वियसली ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? ये हमने आइडेंटिफाई किया कि वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। ठीक है। ये उसका वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है, इसलिए ये इसका एडजेक्टिवियल क्लॉज है इस सेंटेंस का। अ पर्सन इज एडमायरेबल। कौन सा पर्सन एडमायरेबल है? हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स। हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स, subject is present, verb is present, it's a clause. And since this clause, this extra information is added to this sentence and is working over here as an adjective, this clause is considered over here or is taken over here as an adjectival clause. One example is done. Let's move on to the next board and we'll do the second example. Let's go. It's a very famous proverb. People who live in glass houses should not throw stones. People who live in glass houses again subject, verb, right? Even the object is here in glass houses. Should not throw stones. People should not throw stones. Which people? Who live in glass houses. So it's the adjective that describes which people. We'll go to the next sentence. Who is again a relative pronoun. The books that have been recommended are all out of stock. The books are all out of stock. Which books? That have been recommended. Subject is present, verb is present, and it's starting with a relative pronoun. By this time, you must become a pro in identifying the adjectival clause because we did a whole lecture on adjectival and adverbial clauses. Let's move on to the next sentence. The question that she posed was too difficult to answer. The question was too difficult to answer. Which one that she posed? Subject, verb. Everyone who has been invited is present. Everyone is present. Who? Everyone who has been invited. Subject, verb. So this is working as an adjectival clause. Your exercise C is asking you to 1. Identify the adjectival clause and 2. Replace it with the adjective. How are we going to do that? ठीक है. First, find the relative pronoun in the sentence. He is a person who considers the interests of other people. He is a person who considers the interest of other people. So this is the adjectival clauses. He is a person who considers the interests of other people. We will just say he is a
considerate person. Instead of this clause, we have added the adjective and the meaning remains the same. He is a person who considers the interests of other people. He is a considerate person. Second example, which is the road that leads most quickly to the station? Which is the road to the station? And we will just add shortest. Which is the shortest road to the station? We can omit this. And the meaning remains the same. We have identified the adjectival clause, we have replaced it with an adjective, and the meaning of the sentence has remained the same. How did we identify the adjectival clause? Simply by looking at where the presence of the relative pronoun. Wherever the relative pronoun is, definitely the clause is going to start from there. The explanation he gave us was not satisfactory. The explanation that he gave. The explanation was not satisfactory. ठीक है? The explanation that he gave, right, was not satisfactory. The explanation was not satisfactory. Which explanation that he gave? Instead of writing this, we can say the explanation was unsatisfactory. The explanation was unsatisfactory. Same meaning. We have replaced the clause with the adjective. The next example from your book. This is the place where our forefathers landed. ठीक है? Where our forefathers landed. This is the landing place of our forefathers. I hope you are not only comprehending but copying it down in your textbook side by side. The last question from your book is, the reason why he failed was obvious. The reason of his failure was obvious, or it was obvious that he failed. आपकी exercise A, exercise B, exercise C, all of them are solved on my whiteboard. All you need to do is to pause my lecture, copy them down and start preparing for your exam. I have not only given you all the answers, but I have even explained them to you, so that if a statement that is not from these ones, the examples that are present on your book, you can solve the question. Let's move on to the last topic for today. Let's go to the next board. आपका लास्ट टॉपिक है कंडीशनल वर्ब फॉर्म. आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे और एमसीक्यूज थे. उसमें आपको एक कंडीशनल वर्ब फॉर्म को पुट इन करना है. सबसे पहले तो आप कंडीशनल वर्ब फॉर्म को आइडेंटिफाई करें. अगर आपका इफ का क्लॉज प्रेजेंट है सेंटेंस में, तो आप उसमें कौन सा कंडीशनल वर्ब लगाएंगे? आप लगाएंगे इफ, उसके साथ सब्जेक्ट और उसका सिंपल पास्ट टेंस. अगर आपका इफ का क्लॉज मौजूद है किसी सेंटेंस में,
तो उस क्लॉज के बाद आपने इफ के बाद एक उसका सब्जेक्ट लिखना है और सिंपल पास्ट टेंस लिखना है। लेकिन अगर आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला हुआ है और उसमें आपने कंडीशनल वर्ब लगाना है, कंडीशनल वर्ब का कंडीशनल फॉर्म लगानी है, तो आपने लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से जो भी उधर अप्रोप्रिएट आपको लगे वो आपने लगाना है, और आखिर में सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वो सिंपल चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, लेकिन वो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो उस सेंटेंस या टेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ हिरा वर्कड हार्ड, सिंपल पास्ट टेंस लगाया है, हिरा इज द सब्जेक्ट और टेंस मेरा सिंपल पास्ट है। उसी तरह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी कुड विन द कॉन्टेस्ट, इसमें आप माइट भी लगा सकती हैं, इसमें आप वुड भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर इंटेंशन इज रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक सेंटेंस। लाइक शी कुड विन द कॉन्टेस्ट, she would win the contest, she might win the contest, depending upon your mood. आपको मैंने कहा था ना कि ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, मूड्स होते हैं, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या इधर स्पेसिफाई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके बुक में, एक्सरसाइज डी मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं सिंपल रीड करूंगी, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस दूंगी, आपने मेरे साथ समझना है और जल्दी जल्दी से इसको बुक के अंदर फिलअप कर लेना है, ठीक है। इफ ही वर यंगर, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस वर। इफ देखिए इफ का क्लॉज है, सिंपल पास्ट टेंस, इफ ही वर यंगर ही वुड ट्रैवल मोर, ही वुड ट्रैवल मोर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इसलिए आपने उसमें वुड लगाया है। इफ आया है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, यही यहाँ पे ऑल दो प्रोनाउंस हैं बट ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इफ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड, ठीक है। इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस, आई वुड हैव अ गुड जॉब, आई कुड हैव अ गुड जॉब, आई माइट हैव अ गुड जॉब, लेकिन वहां पे चूंकि विल दिया हुआ था इसलिए हमने वुड यूज किया है। इफ शी पास्ड द एग्जाम्स शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। अब आप ये देखें कि जितने भी यहाँ पर जितने भी 1 2 3 4 सारे इफ हैं, इफ का मतलब है कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इन सब डिपेंडेंट क्लॉजेस को उनके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से कॉमे के साथ हमने सेपरेट किया है, ठीक है। बट लास्ट सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है, वी वुड बाय अ हाउस इफ वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है, कोई कॉमा नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इफ के साथ आपने सीधा सीधा पास्ट टेंस लगा देना है, और जो आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ आपने अपने मॉडल्स यूज करने हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन है उन्होंने एक जम्बल्ड अप सेंटेंसेस दिए हुए और उन्होंने आपको कहा कि इसको इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वर कॉट द थीव्स, वर द थीव्स कॉट। इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट आप हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड विल बी माई अपॉलॉजी, will my apology be accepted, ठीक है। The workers by computers will be replaced, ठीक है। अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि the computers will replace the workers, लेकिन आपने पैसिव वॉइस में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे,
The workers will be replaced by the computers. ठीक है, who's doing the job? Computers are doing the job. ठीक है, who is being replaced? Workers. Was the accident by the police seen yesterday? ठीक है. Did the police saw the accident yesterday? No. First, the object. ठीक है, because it's the passive voice. Was the accident seen by the police yesterday? ठीक है, where the first underground railway opened was. Okay. Where was the first underground railway opened? A world without books. End it. Last lecture today. We did vocabulary meanings, we did glossary, synonyms, antonyms, question answers, additional questions, and all the grammar work. I have explained each and every topic, grammar topic, and I have given you the answers on the board. Grade 10, pay a lot of attention towards what we are doing because we need to be getting the highest marks, because we need to be the highest achievers. ठीक है, अपना बहुत नहीं, बाद में ख्याल रखना, पहले रिकैपिचुलेट करेंगे. ठीक है, क्या किया हमने आज? हमने एडजेक्टिवियल क्लॉजेस किए, हमने कंडीशनल वर्ब्स किए, हमने रिलेटिव प्रोनाउंस किए, और हमने जम्बल्ड अप सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके उनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया. अपना बहुत ख्याल रखना. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. अल्लाह हाफिज.